But there has to be some questions. Yes, sir. We will start. Just a minute. Good evening, everyone. On behalf of agricultureinformation.com, I welcome Mr. Rathin Bhadhra, and he will talk about unscientific water harvesting, conservation, and government's ignorance on it. I now request the speaker to begin. Thank you. Thank you, agriculture.com, for giving me this opportunity. But the thing is that one very important thing that we are talking about is water harvesting, and the unscientific ways that are being used today for water harvesting has created a lot of problems today in the world. It is not only the problem of India, but it is the problem of the world now. We are taking our water from 500 feet, 600 feet, 700 feet, and 800 feet, but we are leaving the water in 100 feet, 50 feet, 10 feet, 20 feet. So these are all just an eyewash that is being taken care by the government or by the agencies who have been hired by the government or has been advised by the government. So this is one of the biggest problem that we all are facing, and the government is very ignorant about it. Even after so many warnings from Niti Aayog and several world, renowned peoples who are working on this water sector, and even by the UN and even by several other countries and peoples and intellectuals from the climate change and other sectors, there is a big ignorance from the government. I don't know how people are taking care of it and how people are thinking about it and what will be the future. If this goes on, the future is very dark basically. So there are several things that are happening, but why I call it an unscientific way of water conservation? Have you ever thought about it, that why it is known as unscientific way of water conservation? Why people like us now are going on talking about all these things? The answer is very simple. The water harvesting or the rainwater harvesting that is being suggested by the government to the builders, what they are suggesting? They say कि छत का पानी लाओ, 100-150 फीट बोरिंग करो और जमीन में छोड़ दो. But I have a very simple question to all of you. If you plan to do a boring in your house, so wherever you feel like doing a boring, do you get water from that boring? The answer is no. So wherever you feel like and you do the boring, and when you don't get water in that particular boring, so how is it possible to do a boring and keep the water there? Anywhere that you feel like कि यहाँ पे आज मैं बोरिंग करके पानी रख दूं, and you want to do the boring there and you want to keep the water there. छत का पानी कहीं से भी लाओ, कहीं पर भी बोरिंग करो, छोड़ दो. जब कहीं पर भी बोरिंग करके हमें पानी नहीं मिल सकता है, हर जगह बोरिंग करके पानी हमें जब नहीं मिल सकता है, तो हर जगह बोरिंग करके हम पानी छोड़ कैसे सकते हैं, रख कैसे सकते हैं? दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी ऑल आर फेसिंग, and that is the reason several places like Bangalore, Hyderabad, Ranchi, Indore, all big cities like Delhi, we are facing a severe water crisis. If you talk about the rainwater harvesting, it is mandatory in all the apartments in Bangalore or Ranchi or all these cities that I'm talking about. But
Is there a small increase of water table, even a small increase of water table in this area? No. तो ये इतना कुछ देखने के बावजूद, इतना कुछ जानने के बावजूद सरकार के तरफ से कोई एक्शन नहीं, किसी तरह का कोई काम नहीं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो किसी तरह का कोई एक्शन नहीं. देयर आर सेवरल प्लेसेस where we apply, we get chosen, we are chosen also from Amrit 2.0. Niti Aayog also is writing about us in their books and everything. Then ultimately उसका result क्या है? साइंटिफिक वे ऑफ वाटर कंजर्वेशन करने वालों की क्यों इतनी कमी है? और अगर है भी, अगर लोग अगर है काम करने वाले, तो उन्हें काम क्यों नहीं है? ये इट इज सिंपली इट इज एन इग्नोरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट. क्या आज बैंगलोर जैसे जगह पे अगर इतना पानी की क्राइसिस है वहां पर, तो क्या बैंगलोर की जो कर्नाटका की सरकार है, वो भारत सरकार से नहीं बात कर सकती कि आपके अमृत 2.0 से ओ के जितने विनर्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के जो विनर्स हैं, उनमें से कौन है जो साइंटिफिक वाटर कंजर्वेशन का काम करता है, या बाकी उन लोगों ने क्या क्या जो काम करने वाले और लोग हैं, इन लोग को आप हमारे पास भेजिए और हम लोग काम उनको देंगे? क्या ये बात वो नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं. And government of India has also sanctioned an amount of 667 crores to help these startups of Amrit 2.0. But ना आप उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे, ना आपको इसके ऊपर बहुत कुछ काम करना है, सिर्फ रोना है कि पानी खत्म हो जा रहा है, पानी खत्म हो जा रहा है. और वी इंडियंस आर हम लोग बहुत जल्दी एडजस्ट कर जाते हैं कोई भी चीजों के लिए. हमारे यहाँ पर इन रांची, there's a place called Harmu. Dhoni, MS Dhoni's house is there in Harmu. And Harmu itself, more than 6,000 pumps have dried up. 6,000 पंप एक छोटे कॉलोनी में, 6,000 पंप्स हैव ड्राइड अप. गर्मी के दिनों में टैंकर से पानी आते हैं लोगों के पास. और ऐसा नहीं है कि हरमू में जो लोग रहते हैं वो कोई बहुत ही निम्न कैटेगरी के लोग हैं, मतलब जो बहुत गरीब लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं. एक एक घर वहां पे आज के डेट में करोड़ों का है. द प्रॉपर्टी प्राइस इज वेरी हाई इन हरमू. पीपुल हैव गॉट गुड मनी आउट देयर, बट दे हैव एडजस्टेड देमसेल्फ कि चलो वो टैंकर आ रहा है ना, टैंकर से पानी अपने टैंक में आ जा रहा है ना. दे हैव एडजस्टेड देमसेल्फ. So we Indians are very adjustable. So the thing is that कब तक हम लोग इस तरह से अपने आप को एडजस्ट करते रहेंगे? कब तक हम लोग इस तरह से आगे, मतलब अनसाइंटिफिक वे ऑफ काम को करते रहेंगे? सरकार भी इग्नोरेंट रहेंगी, हम जनता भी इग्नोरेंट रहेंगे उसके उसके ऊपर. चलो चलता है वाला एटीट्यूड चलते रहेगा. मुझे अब समझ में नहीं आता है कि ये स्ट्रैटेजी क्या, ये इतने बिल्डर्स जो हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स अरबों के बिल्डिंग्स बना रहे हैं, अरबों के अपार्टमेंट्स बना रहे हैं. वन ईच फ्लैट माइट बी कॉस्टिंग मोर देन 1 करोड़ एंड अदर एंड मोर. रांची में तो आज एक एक फ्लैट इज मोर देन 1 करोड़. तो बैंगलोर में वो 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ का होगा. हैदराबाद में भी इट विल बी मोर देन दैट. आंध्रा के कई सारे क्षेत्रों में प्रॉपर्टी का रेट इज वेरी हाई. The builders are building their houses, building their what you call big apartments and everything, and in the name of rainwater harvesting, वही छत का पानी लाओ, 100-150 फीट बोरिंग करो और छोड़ दो, और वो चलते बनाओ.
उसको तो रहना नहीं है, he has to sell the property and he has to go. But he is forgetting that he is creating a future, a dark future for his own son, daughter, or the next generation that is going to come. There is an urgent need to change the status quo. The farmers who are only taking out water from the ground and depending on the groundwater for their agriculture, they are facing a severe crisis now. The food crisis is going to be a bigger problem in the near future. And if the government still don't think that we are in a place, in a situation where this is a bigger crisis, then हमारा तो भगवान ही मालिक है. इस तरह से हम लोग परेशानियों को फेस कर रहे हैं और अनसाइंटिफिक वे ऑफ वाटर कंजर्वेशन करते आ रहे हैं. जहां मन किया बोरिंग कर रहे हैं, जहां मन किया पानी को रख रहे हैं. बोरिंग करके पानी जहां तहां नहीं रख सकते हैं, बिकॉज द 70% ऑफ इंडिया इज स्टैंडिंग ऑन सेमी कन्फाइंड एक्वाफर्स. एंड सेमी कन्फाइंड एक्वाफर्स के मुंह जो होते हैं, रिचार्ज के मुंह जो होते हैं, एक या दो या तीन होते हैं. वी नॉर्मली डोंट स्टे इन इंडो गैंगेटिक प्लेन्स. हम पटना या वेस्ट बंगाल में नहीं रहते हैं कि पूरा ऊपर से नीचे तक एलुवियल सॉइल है, पूरा ऊपर से नीचे तक सॉइल का स्ट्रक्चर है, कहीं पर पानी डाल दो कहीं पर भी आ जाएगा. इफ यू सी द स्ट्रक्चर इन बैंगलोर, देयर इज ग्रेनाइट, हार्ड रॉक इज देयर आफ्टर 40-50 फीट. इन रांची ऑल्सो एक 50-100 फीट के पास, 10 फीट के बाद, 20 फीट के बाद, कहीं 50 फीट के बाद हार्ड रॉक है, इग्नियस रॉक है. हमारे यहाँ ग्रेनाइट है. इंदौर, मराठवाड़ा, ये सब क्षेत्र में बसाल्ट है. These are all igneous rock. इसमें पोरोसिटी नहीं होती है. यहां सेमी कन्फाइंड एक्वाफर्स पाए जाते हैं. सेमी कन्फाइंड एक्वाफर्स का एक, दो या तीन मुंह होता है उसको रिचार्ज करने के लिए. एंड ड्यू टू अनसाइंटिफिक वे ऑफ अर्बनाइजेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, वी हैव क्रिएटेड इट टू बी ए क्लोज्ड एक्वाफर. हमने उस मुंह को बंद कर दिया है अनसाइंटिफिक वे ऑफ अर्बनाइजेशन करके. और जब वो मुंह बंद हो जाता है, जहां से आप रिचार्ज करते थे या रिचार्ज होता था, वो एक्वाफर बिकम्स अ क्लोज एक्वाफर. वो मटका तभी तक आपको पानी देगा, वो एक्वाफर तभी तक आपको पानी देगा जब तक उसमें पानी है. और एक बार जब वो एक्वाफर खाली हो जाती है तो बस हम छोड़ देते हैं. वी गो फॉर अनदर बोरिंग. एक अलग जगह पे एक और बोरिंग कर लेते हैं. तो इस तरह से काम करके, इस तरह से इग्नोरेंट एटीट्यूड के साथ हम लोग नहीं जी सकते हैं. हमारा नेक्स्ट जनरेशन को हम नहीं बचा पाएंगे. इट विल बी एन वेरी डिफिकल्ट फेज. वी आर ऑलरेडी फेसिंग डिफिकल्टीज. आज पानी का दाम पेट्रोल से ज्यादा हो गया है. एक अच्छे पानी का बोतल का दाम मोर देन 100 रुपीज है. पेट्रोल हमारे यहाँ 92-97 में मिलता है, बट 100. आज एक हिमालय की बोतल आप लेने जाओ, इट इज मोर देन 100 रुपीज. समझे? अंडरस्टैंड. द गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड. And why, I'll ask the government, why you always keep gun in our shoulder and try to fire it? आज जितने गवर्नमेंट के प्रॉपर्टीज है, जितने गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स है, इस गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज में, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में ही अगर वो साइंटिफिक वाटर कंजर्वेशन का काम करा ले तो 50% का 70% प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा. कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे गवर्नमेंट का प्रॉपर्टीज नहीं है? वो अपने ही प्रॉपर्टीज में खाली काम करवा ले तो सॉल्यूशन बहुत बड़ा हो सकता है. जल जीवन मिशन के तहत जिस तरह से पानी बोरिंग करके पानी निकाला जा रहा है और उसको रिचार्ज करने का कोई भी तरीका नहीं अपनाया जा रहा है, जस्ट कि हमको पानी देना है, घर घर पानी पहुंचाना है, वो जल जीवन मिशन के तहत हम घर घर पानी पहुंचा रहे. कैसे पहुंचा रहे? अगर वहां नदी नहीं है,
कुछ नहीं है, तो वी आर मेकिंग अ शाफ्ट, हम लोग वहां पे बना रहे हैं बड़े बड़े शाफ्ट, या वहां पे हम लोग बोरिंग कर रहे हैं, वहां से पानी लेके हम लोग सप्लाई कर दे रहे हैं। बट व्हाट अबाउट द रिचार्ज? इट इज ओनली अबाउट द विड्रॉइंग। यू आर गिविंग अ टेम्पररी बेनिफिट्स टू द पीपल। अल्टीमेटली अगर वहां पानी का बहुतायत अभी है, तो वो जाके बाद में दे आर गोइंग टू फेस एन बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दैट एरिया। Chennai is almost in the it is called day zero now in Chennai. Water has gone 2000 feet down. 2000 फीट तक वो नमकीन पानी हो गया वहां पर। क्या? क्यों? क्योंकि हमने मीठा पानी वहां से सिर्फ निकाला है, हमने डाला नहीं है। अगर हम साइंटिफिक वे ऑफ वाटर कंजर्वेशन एक्वालाइन भुंगरू के जैसा हम काम करते, तो उसमें हम लोग मीठा पानी डालकर वी कुड हैव क्रिएटेड एन वॉल अगेंस्ट द सॉल्ट वाटर। लेकिन गवर्नमेंट के इग्नोरेंस के कारण, आम आदमी के इग्नोरेंस के कारण, बिल्डर्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, इनके इग्नोरेंस के कारण आज हमारी सिचुएशन ये आ गई है कि चेन्नई जैसे जगहों पे इतना पानी होने का, बारिश होती है, इतनी फ्लड हो जा रही है, लेकिन उस पानी को हम अंदर नहीं ले जा रहे हैं, बिकॉज अनसाइंटिफिक वे ऑफ वाटर कंजर्वेशन। वहां पे अनसाइंटिफिक वे ऑफ ये बनाया, अर्बनाइजेशन हुआ है। जितने भी वहां पे आप देख लीजिए, व्हाट यू कॉल द ड्रेनेज सिस्टम एंड ऑल, इट इज चोक्ड, इट इज ब्लॉक्ड। जहां जो नहीं बनना चाहिए था वहां वो हुआ है। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू लिसन टू what I'm again going to say you how to do an scientific way of water conservation like we are doing it. आप मुझे कोई भी एक जगह दे दे और उस जगह पे हम जाते हैं, जाके उस जगह का साइंस का इस्तेमाल हम करते हैं, सेंस का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी जगह पे आप जाएंगे, कुछ भी बिल्डिंग बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, यू विल डू ए रेकी देयर। तो हम वहाँ वॉक थ्रू ऑडिट करते हैं, वहाँ रेकी सर्वे करते हैं, वहां जाके उसका कंटूर एरिया देखते हैं, वहाँ का नेचुरल ग्रेडियंट देखते हैं, वहाँ का मूवमेंट ऑफ वाटर देखते हैं, फ्रेश वाटर का मूवमेंट क्या है, ग्रे वाटर का मूवमेंट क्या है, आज वहाँ पानी की क्वालिटी क्या है, 50 साल पहले वहाँ पानी की पोजीशन क्या थी, आज बोरिंग की पोजीशन वहाँ क्या है, 50 साल पहले बोरिंग की पोजीशन वहाँ क्या थी, 100 साल पहले पानी की पोजीशन वहाँ पे क्या थी, मिट्टी का क्वालिटी क्या है, पानी का क्वालिटी क्या है, वहाँ पे क्या लोकल एंथ्रोपोलॉजी है, वहां पे किस तरह का लोकल वेजिटेशन है, वहां पे क्या पेड़ Sir, पौधे हैं, sir, sorry वहां to पे क्या interrupt. कीड़े मकोड़े हैं। Sir, I'm sorry to interrupt you. Sir, maximum try to talk in English, sir, because we have members who don't understand Hindi also. That's the reason. ओके। Okay? नो Okay. प्रॉब्लम, नो You प्रॉब्लम। continue, sir. सो even the insect says us whether we can keep water in this place or not. And this particular system has been mentioned by Varamir 5,000 years ago in their book. If you go through your Granth, if you go through your ancestral book and properties and ancestral thinking, you will know our ancestors were more scientific than us. The technique of Aqualine Bhungru was mentioned by Varamir in 5,000 years ago in their book. Now, when we come to know, when the insects also says where we can keep the water, then the second phase of work comes in our technology. And the second phase is technical audit of subsoil formation. In this place, what we do the satellite mapping and the geophysical study of that particular area. Up to 1,000 feet deep, up to the depth of 1,000 feet, we do a satellite mapping and geophysical study, the resistivity survey of that particular area, and we come to know everything what is there in the depth of 1,000 feet. Where is coal, where is gold, where is what, we get everything. In that
after doing a proper study of that geophysical study, we come to know that where can we keep the water? We find out in hungry strata, and hungry strata can be in a depth of 200 feet also, 500 feet also, or 800 feet also. So normally when we get a better hungry strata, accordingly we make a drawing and designing of that particular area, and then we do a deep boring in that area. And we also insert a perforated pipe along with the boring. Then we also insert an injection module, which is an innovation of us. After that, we create a big, you can say a big well sort of thing, a 10 by 10 by 10 feet of a small well, not big, but small well. But as per the government rules and regulation, we call it 10 by 10 by 10, but we make it as per the geohydrological requirement. It could be of 15 by 10 also, or 15 by 20 also, or 6 by 10 also. It depends upon the geohydrology of that particular area. So we make a well sort of thing, which we can call it a recharge pit. This particular recharge pit is again filled with different kind of gravels, like big boulders, small boulders, 20 mm metal, 40 mm metal. We also take charcoal also in that. We use sand also in that. Charcoal, why we use? Because charcoal is a very good, what you call, product, which clears the smell from the water. Charcoal is normally used in, you can say, your ROs and other places. It cleans the water, it also clears the smell from the water. And once when this pit is ready, the filtration pit is ready, or the recharge pit is ready, what we do, all the four walls, we just take it up a bit, 1 feet higher than the normal ground level. We take it 1 feet higher than that particular ground level. Now, what happens whenever there is a rainfall? The due to the natural gradient, because we are in a natural gradient, so water comes to us. The rainwater comes to us towards us, and we create an catchment of 10,000 to 20,000 liters. After that, what we do, by using the natural gravitational force, we take the water inside, and our injection module turns the water into bubbles. And these bubbles are injected in that hungry strata. The sand particles. Hungry strata means the balunuma mitti, or sand mitti, what you call. So the bubbles are the bubbles created by the injection module are injected in the sand particles of that particular area. And by doing this, a 1 acre of land, 700, 800 feet down depth, in the depth of 700, 800 feet, a 1 acre of land becomes our Tanki without a syntax. There is no syntax inside. It is a God-created syntax, which we refill by injecting bubbles in those sand particles. A 1 acre of land becomes our Tanki without a syntax, and in one rainy season, in one particular rainy season, we absorb or we conserve so much of water that we can give water for 6 months in the dry season for 20 acres of land. If you can give water for 6 months for 20 acres of land, then you can think how much water we can give for drinking. If you do the calculation, or if we talk about the calculation that we have done, the work that we have done in Jharkhand and other places, we have gotten catchment of 1.5 crore liters in places of Jharkhand. If we segregate this 1.5 crore liter, and to make it simpler for you people,
Each small pond has got 15 to 20 lakh liter. That means we are keeping 10 ponds inside the ground. And when you keep so much of water inside the ground, the moisture of that water comes up. When the moisture comes up, even the soil, if the soil is banjar and if the soil is not productive, when the moisture comes up, the salt deposition of the soil goes away and the soil again becomes productive. When the moisture comes up, it will naturally go sidewise also. Accordingly, when the moisture goes sidewise, all the borings, nearby borings or nearby chapanals or nearby small ponds and all, it starts getting recharge. And in the long run, it helps in climate change mitigation. That is the reason UNEP has said that this project is in best practice. Niti Aayog said that we are the most scientific water conservation project. That is the reason Niti Aayog in the latest book called Compodium for 75 Agri Entrepreneurs and Innovators have listed us. We are the only rainwater conservationist in that particular book in those 75 people. Only one in that rainwater harvesting sector. That is the reason Ministry of Housing and Urban Affairs wrote that we are the most scientific water conservation project in India. So friends, I know that the government is very ignorant, but it is the time for all of us to stand and start talking and start questioning the government. Why will only we say that why will the government will ask only from us? You do the rainwater harvesting, you do so and so. What the government is doing, they have thousands and thousands of crore rupees and they are surrendering thousands of crore rupees. Today, people are only giving freebies to everybody. Wherever you see every politician, every political party is giving freebies. But what about the future of this earth? What about the future of the universe? What about the future of our next generation? Water is the only thing, only object which you can't make, which you can't give birth. It is the only object that can be saved. So understand the problem, understand the need. None of the hospitals, none of the industries, none of the food industry, none of the things can work or can go on without water. No computer, no industry, no app. Nobody can exist without water. So water is primary. Our body itself is made of 80% of water. And we are ignoring this. क्या करेंगे इतने पैसे का? What will you do with so much of money? Will you drink that money? You can't drink money. You have to drink water. And to drink water and to give a good quality of water to our future generation and a good quantity of water to our future generation, we have to save them. So I request you all the people who are listening to me and through this agriculture.com, I request all the farmers, talk to the government, make them aware that I don't want to only take out water from the ground, I also want to give water to the ground, to my mother earth, who is giving me everything. There has to be a holistic approach to save the universe, to save the climate change, to save our farmers, to save our next generation.
Thank you, friends. Thank you for being with me and giving me the opportunity to talk about this particular project and particular, what you call this topic that is very, very important. More important is the ignorance of the government. We have to talk and talk in a high tone now to make the people aware, to make the government aware that no, you have to do something for us. We don't want freebies. We want projects which can make our future, which can secure our future. And water is the only thing that can save us. So friends, save water, save life. Thank you. Thank you very much, sir, for your wonderful talk. I will take up the questions now. The first question is, how effective have government policies been in addressing the challenges of sustainable water conservation? It is one of the most ineffective. It is the most ineffective because government is absolutely ignorance about everything. They are only talking nonsense. To be very frank, they are simply talking unscientific. Whether it is state or the central. You will have to come up with a proper policy. You will have to change the policies which was there earlier. There is an immediate need of changing the policy of rainwater harvesting. Earlier, we used to get water in 50 to 100 feet. But today, we don't get water in 50 to 100 feet. It's more than 1800 feet and 1500 feet depth has gone in places like Bangalore. It is more than 1000 feet that the depth has gone in places like Ranchi and Delhi. And you're still sticking with the same policy of rainwater harvesting that छत का पानी लो 100-150 feet boring करो and छोड़ दो. What is this? So it is an most insufficient thing today. You will have to immediately change the policy of rainwater conservation and rainwater harvesting for all the builders. There has to be a minimum boring and minimum what you call depth should be, minimum depth should be 500 feet. And that has to be done after that too, not everywhere. You will have to find out a place by doing a geophysical study where to keep water. But just leaving the water on a hard surface that is above the igneous rock is not going to give the solution. So you have to find out a place where to keep the water by doing a proper geophysical study and scientific survey has to be done. Then only you have to do the boring and do the proper way of scientific water conservation. This should be mandatory. Projects like Aqualine Bhungru and other projects like Aqualine Bhungru also should be mandatory. So there is a immediate need of changing the policy. Thank you. Okay, thank you very much, sir. We have now completed the round of questions. On behalf of agricultureinformation.com, we like to thank Mr. Rathin Bhadhra for the talk and for answering the question. This meeting will now be closed. Thank you. Namaskar. Most welcome, sir.